हैं एजेंडा 21 एक, ठीक। एजेंडा 21 क्या है? एक नॉन बाइंडिंग है, ए नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरी इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान इन यूनाइटेड नेशंस कंसर्निंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It was adopted by Earth Summit, UN Conference on Environment and Development (UNCD), held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. The 21 in Agenda 21 refers to 21st century, highlighting its forward-looking vision. देखते हैं कैसे शुरुआत हुआ. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फोकसिंग ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक. अर्थ समिट 1992 क्या हुआ? 20th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस विथ ए ब्रॉडर एजेंडा एंड ऑन इन्वायरमेंट एंड development issues. Appraisal after 5 years. A review was conducted at Earth Summit +5 1997 in New York, assessing implementation progress of Agenda 21. फिर क्या हुआ? ये क्या है? एजेंडा 21 लीगली नॉन बाइंडिंग है. वाइल एजेंडा 21 इज नॉन लीगली इन्फोर्सेबल, इट इज सिग्निफिकेंट मोरल गाइड फॉर नेशन एंड वॉलेंटरी adopt sustainable development practices. Voluntary implementation. The action plan encourages government, NGOs, business and international organizations to collaborate towards sustainable development goals. ठीक. ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा 21 का? प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इक्विटी, एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, टैकल पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक. Strengthen international cooperation, enhance global partnership for technology transfer, capacity building, financial support to developing nation. अब एजेंडा 21 का क्या है? सर्वे ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, लिंक्ड टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) एंड अदर आउटकम ऑफ 1992 अर्थ समिट, ठीक. India's initiative, National Biodiversity Act 2002, Biodiversity Management Committees at the local level, poverty eradication and population control, emphasis poverty alleviation programs particularly in developing countries, promote population control measures through education, healthcare and family planning, Alliance to Millennium डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) टू 2000 से लेकर 2015 तक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक. गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 0 हंगर, ठीक है. इंडिया का क्या इनिशिएटिव? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस 2011 में आया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 फोकसिंग ऑन स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, food, clean water and social security, aim to provide basic necessities to all individuals, ensuring food security, clean drinking water and social safety nets, ठीक. This goal aligns to SDG 2 zero hunger, SDG 6 clean water and sanitation, SDG 10 reduced inequalities. अब इंडियाज इनिशिएटिव, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जल जीवन मिशन 2019 to provide tap water to every rural household by 2024, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा for social security through employment opportunities, stress on generous capital transfer, advocate for financial support for developed countries to developing nations to promote sustainable development projects, emphasize the role of international financial institutions like World Bank, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी (GEF). अब एडिशनल इंसाइट्स क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) अंडर UNFCCC एम्स टू मोबिलाइज 100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. इंडियाज एफर्ट क्या था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस, ठीक. आत्मनिर्भर भारत अभियान फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एजेंडा 21 इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस विथ 40 चैप्टर्स. कौन कौन सा? सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस. टारगेट क्या था? पॉवर्टी रिडक्शन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, हेल्थ एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन, ठीक. कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट क्या था?
focus on resource management, biological diversity, forest desertification and climate change. ठीक, strengthening the role of major groups, कौन कौन सा involve women, youth, indigenous people, NGOs, local authorities and businesses in sustainable development initiatives. Means of implementation क्या था? Stress on technology transfer, capacity building, financial mechanism and international cooperation. ठीक, India's implementation of Agenda 21, National Action Plan and Climate Change, NAPCC 2008, 8 national missions including National Solar Mission, National Mission on Green India and National Water Mission. Swachh Bharat Mission 2014, addressing clean water, sanitation and public health. Namami Gange program aim to rejuvenating the Ganga river, reflecting sustainable water management principles of Agenda 21. Global Appraisal and Impact, Earth Summit +5 1997, reviewed the progress of Agenda 21, highlighted challenges in implementation especially due to financial constraints and lack of political will. Rio 10 2002 Johannesburg, known for World Summit on Sustainable Development, reinforced Agenda's 21 principle through Johannesburg Plan of Implementation. Rio +20 2012 in Rio de Janeiro, introduced the Future We Want document, paved the way for sustainable development goals adopted in 2015. With reference to the Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statement. It is a global action plan for sustainable development. सही है. It is originated from World Summit on Sustainable Development held in नहीं, ये तो फिर से जोहान्सबर्ग में ये देखा गया कि क्या हुआ है. ठीक, इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक, Agenda 21 is indeed a global action plan for focusing on sustainable development. It was adopted at Earth Summit, United Nations Conference on Environment Development, held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. The 21 signifies the 21st century, reflecting forward-looking approach to global challenges. Agenda 21 is non-binding and is implemented voluntarily by national, regional and local governments to promote sustainability. Additional insights. Key focus areas of Agenda 21: social and economic dimensions, poverty eradication, population dynamics, health and sustainable consumption, conservation and management of resources, focus on biodiversity, climate change, forest and land management. Role of major groups, emphasize participation of women, youth and indigenous communities and NGOs. Implementation strategies, financial resources, technology transfer and capacity building. India initiative under Agenda 21 क्या क्या? National Action Plan and Climate Change 2008, focusing on 8 national missions including water, solar energy and green India. Swachh Bharat Mission 2014, aligning the sustainability goals of Agenda 21. It originated to World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2012. नहीं, Agenda 21 did not originate at World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. It was in fact a product of the 1992 Earth Summit held in Rio de Janeiro. Johannesburg Summit, Rio +10, focused on reviewing the progress of Agenda 21 and introduced the Johannesburg Plan of Implementation, but it did not initiate Agenda 21. ठीक, in the 2002 Johannesburg Summit emphasized sustainable development, particularly poverty eradication, water sanitation, energy efficiency, biodiversity conservation. ठीक, WSSD reinforced Agenda's 21 principle but did not replace or originate it. ठीक, अब आते हैं हम लोग. Earth Summit was held in Rio de Janeiro. ठीक, the Earth Summit, officially known as United Nations Conference on Environment Development, was held in Rio de Janeiro, Brazil from 3rd to 14 June 1992. Agenda 21, a comprehensive action plan promoting sustainable development globally, nationally and locally. ठीक, Rio Declaration on Environment and Development established 27 principles for sustainable development, including precautionary principle and polluter pays principle. Okay, established 27 principles for sustainable development, including precautionary principle and polluter pays principle. ठीक,
फॉरेस्ट प्रिंसिपल नॉन लीगली बाइंडिंग गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट. इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD. ठीक. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC. ओके. कायरो में क्या हुआ था? द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन कायरो इजिप्ट इन 1994, फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन इश्यूज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेंडर इक्वालिटी, बट नॉट रिलेटेड टू अर्थ समिट. ठीक. The Earth Summit was held in Rio de Janeiro, leading Agenda 21 and other significant outcome. Durban Conference usually refers to 2001 World Conference Against Racism or COP17 to the UNFCCC, focusing on climate negotiation but not the Earth Summit. Kyoto Protocol 1997 was a treaty under UNFCCC aimed at reducing greenhouse gas emission, but the Kyoto city did not host the Earth Summit. यहाँ देख लेते हैं हम लोग. स्टॉकहोम समिट कब हुआ था? 1972 में. ठीक. कहाँ? स्वीडन, मतलब देश में स्वीडन. यहाँ क्या? इस्टेब्लिश्ड UNEP और फर्स्ट ग्लोबल फोकस ऑन इन्वायरमेंट पे. ठीक. अर्थ समिट UNCED में 1992 में. लोकेशन रियो डी जेनेरो. एजेंडा 21 CBD UNFCCC फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. ठीक. ये 1992 में रियो डी जेनेरो में. वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में. लोकेशन जोहानिसबर्ग. क्या हुआ? जोहानिसबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफ एजेंडा 21. वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहानिसबर्ग ये रहेगा. रियो +20 UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरो. फ्यूचर वी वांट डॉक्यूमेंटेड पेव द वे फॉर SDGs. Kyoto Protocol 1997 Kyoto Japan legally binding target for GHG emissions reduction greenhouse gases का. ठीक. पेरिस एग्रीमेंट 2015 पेरिस फ्रांस limit global warming to well below 2 डिग्री सेल्सियस, प्रोबेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक. तो ये होता हम लोगों का ख़त्म. थैंक यू, बाय बाय. ये एजेंडा 21 ख़त्म हो गया. अब आगे पे आते हैं.